Feminism is not about making women strong. Women are already strong. It is about changing the way women perceive that strength. A very warm good afternoon to all and happy Women's Day to all the dynamic, energetic, and beautiful ladies present here. Today, we all are gathered here to celebrate International Women's Day at IPS Academy, Indore. We have with us Honorable and respective Chief Guest, Ms. Smita Bhardwaj, IAS, Principal Secretary, Cotton and Rural Industry MP. And also we have among us Chief Guest Honorable Ms. Anuradha Saxena, ma'am, and motivator and eminent social worker. We have privilege and honor to have Dr. PVKS Hettiarachchi, ma'am, from Oral Medicine and Radiological Department, University of Peradeniya, Sri Lanka. And we have among us Dr. Gayani, ma'am, Department of Textile and Apparent Engineering, University of Mokavo, Sri Lanka, as a guest of honor for the today's event. It is a pleasure and honor to have Mrs. Kumudni Chaudhary, ma'am, Ms. Nidhi Jain, ma'am, Honorable Management Member with us. We also welcome principal of various colleges, all directors, and all HODs, and all my dear faculty members. I, Dr. Rena Jadhav. I, Nikita Sharma. Welcome the guest and faculty member in this International Women's Day celebration on behalf of Cultural Committee IPS Academy, Indore. On this auspicious day of celebration of International Women's Day, with the theme, how important is balancing of mind and soul for a working and a housemaker woman. International Women's Day is a global celebration that celebrates the social, economics, cultural and political achievement of women of today. We are going to honor such eminent women with the prestigious Women of Substance Award. Nothing can dim the light which shines from within. On 8th March every year, International Women's Day is celebrated to raise awareness about women equality, funds rises for female-focused charities, and to celebrate women's achievement. A strong woman knows she has a strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is the journey where they will become strong. So, without any further ado, let us start this journey of acknowledgement and accomplishment and women empowerment. Let's start this event by offering our prayers to Ma Saraswati and conduct lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, goddess of knowledge. For this, I would like to invite our chief guest, Ms. Smita Bhardwaj ma'am, Ms. Anuradha Saxena ma'am, our guest of honor, Dr. PVKS Hettiarachchi ma'am, Dr. Gayani ma'am, our management members, Mrs. Kumudni Chaudhary ma'am, Ms. Nidhi ma'am, cultural in charge, IPS Academy, Dr. Manish Pundlik sir, to come on a stage for lamp lighting. Please welcome ma'am and sir. हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Thank you, ma'am. Thank you. Women are like flower who bloom and beautify the world. And today we are lucky enough to have been present here to pay our respect and welcome to such great personality. I would now like to invite Dr. Sunita Sharma, Principal B.Ed Department, IPS Academy Indore, to welcome Mrs. Smita Bhardwaj ma'am with a floral welcome.
Thank you so much, ma'am. The empowered woman is powerful beyond measures and beautiful beyond description, and such great personalities among us. So, now I request Dr. Rupali Sharma, Principal College of Law, IPS Academy, to present the floral welcome to Anuradha Saxena, ma'am. Please, ma'am. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Now, I request Professor Tapti Rao ma'am, Wellness Coach, IPS Academy, please present a floral welcome to Dr. PVKS Hettiarachchi ma'am. Thank you, ma'am. Now, a woman is like the pillar of strength, not only for her family, but also for her society, for her workplace, and for her country. With this quote, I would like to request Professor Veena Chibbar ma'am, Head Department of Training and Development, IPS Academy, please present a floral welcome to Dr. Gayani K. Nandasiri ma'am. Thank you very much, ma'am. When we do the best, we never know what miracle is worth in our life or in the life of another. To welcome our Honorable Mrs. Kumudni Chaudhary, ma'am, I request Professor Kavita Chaudhary, Department of School of Computer Science, IPS Academy, to present floral welcome. Thank you so much, ma'am. Now, I request Miss Neha Sharma ma'am, ICRS and NSS in charge, IPS Academy, for presenting a floral welcome to Miss Nidhi Jain ma'am. Thank you, ma'am. Now we have a surprise message for all of you by the pillar and founder of IPS Academy, Architect Ajal Chaudhary sir, President IPS Group. Can we have a message, please? सभी को नमस्कार, सादर वंदन। आज इस महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शत शत प्रणाम, अभिनंदन और बहुत बहुत बधाइयाँ। यूँ हम देखें तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का महत्व हमेशा एक चिरकाल से चला आ रहा है। क्योंकि आप देखें कि यदि हम विद्या की बात करें तो माँ सरस्वती, हम भोजन की बात करें तो माँ अन्नपूर्णा, हम पैसे की बात करें तो माँ लक्ष्मी, और इन सब से हटके यदि हमको कहीं ताकत चाहिए, हमको कहीं शक्ति चाहिए, तो दुर्गा के रूप में हमको ये मिलती है। तो चिरकाल से जो चला आ रहा है भारतीय संस्कृति में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान हमें बनाए रखना चाहिए, जो आज की पीढ़ी धीरे धीरे थोड़ा भूलते जा रही है। मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा यूरोपियन संस्कृति को कि जिन्होंने भले ही देर आयत दुरुस्त आयत महिलाओं के महत्व को पहचाना और महिला दिवस के रूप में इसको मनाना चालू किया। महिलाओं से सिर्फ जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो हायर पोस्ट पे पहुंच गई हैं, जो कहीं चीफ हैं, उनको ही हम नहीं लें। यदि कैरियर देखा जाए तो एक हाउसवाइफ का भी बहुत महत्वपूर्ण कैरियर होता है। जितना तरह तरह के रोल महिला को करने पड़ते हैं, वो वास्तव में यदि पुरुष को दिया जाए तो वो हर जगह पे फेल होगा। इसलिए महिलाओं का महत्व हम समझें और एक बार पुनः सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, और इसी तरह से सोसाइटी की प्रगति में वो अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। I would like to thank sir from all of us that thank you so much, sir, for this surprise message. You put example of goddess Ma Durga, Ma Lakshmi, that are really very wonderful, that you are relating the ladies with that goddess, and you just enlighten us importance of women in this message, whether they are
housewife or they are working. So thank you so much, sir. Behind every successful woman is a tribe of other successful women who has her back every time a woman stand up for herself without knowing it or claiming it. She stands up for all women. Now, I would like to invite Mrs. Smita Bhardwaj, ma'am, IAS Principal Secretary, Cotton and Rural Industry MP. Ma'am hardly requires any introduction, but it is my privilege and honor to introduce such an honorable personality. Ma'am has completed graduation in microbiology, masters in sociology, diploma in public administration from ENA Paris, France, presently working as principal secretary, cotton and rural industry, government of MP. Ma'am has worked earlier in various capacities as CEO, Jila Panchayat, collector and commissioner in government of MP as well as served in government of India and different ministries. Madam research work is in area of rural development and written articles on water shield management and policy matters. Ma'am have lots of interest in painting, reading, music, poetry. Ma'am have written 4 books. Out of 3 are coffee table book. One of them is on Indore called Vintage Indore. Ma'am has interest in science as well as art. Ma'am has given voiceovers, anchoring person and script writing in many films. Ma'am has conducted camp for various children in age group 8 to 16 in Maharashtra, where the children were exposed to living in outdoors with focus on physical exercises such as rock climbing, shooting, riding, swimming, etc. Ma'am have interest in tennis, swimming, and many other. Ma'am has been the best woman athlete at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Missouri. So I request, ma'am has a student pilot license from MP Flying Club. So I request ma'am to please grace the audience with your words. Please, ma'am. Good afternoon. Thank you so much, the IPS family, for inviting me here. And Madam Vora, I think because of, I was telling her when I got her call, I was busy in a meeting and I said, please message and I'll get back to you later. Probably had she spoken to me that you have to come and speak on Women's Day, I would have ducked under some excuse and not come, because that's what I've been doing for past few years. For a simple reason that it has become quite a cliche. For so many years, I'm invited on 8th of March. I started feeling like Ganpati Bappa. कि आ गए साल में एक बार मोरया अगले साल पुढच्या वर्षी लवकर या. And so, I just felt that it is not just one day. I do not believe in feminism in such a way that I always believe in equality. When I speak, when I work, when I exist, I do not think myself as a woman. Probably the only time I enjoy being a woman is when I'm shopping, because women have so much of variety to shop from. Baki gender ka meri life mein koi role nahi hai. And all that is because of the upbringing I had. So today, one more reason was that when I heard the topic that is to be spoken about, that I found very interesting and relevant. And the other reason is that today I have my daughters and my mother with me. So it is important for the new generation to understand what is happening, and also a day to say that I'm full of gratitude for my mother, because today what I am is entirely because of her. So today's topic, but before I start talking on that, there was something relevant that came up when I came here. I am the Principal Secretary for Cottage Industries, Rural Industries, for sericulture, for Khadi Gramodyog, for all the crafts which are metal crafts, for all leather works, for all, the haldi and jo achar vagare bante hain, ghar ka saman banta hai, minor forest produce. So I'm very excited because it's very creative field, it's wide field, and I always have believed in promoting handlooms. So before I come to that, one small appeal to all of you, because I see a lot of teachers here. From April onwards till September, from the government, we are going to have a tie-up with Radio Mirchi.
and we are going to promote handlooms. And for which age group? 15 to 25. This is the age group which you only find in malls shopping for denims and tees. They don't believe in handloom. They don't understand what is sustainable fashion. So we are going to conduct various levels of awareness, competitions. You can create designs. We can give you fabric. And from each city, we are going to select one person as the designer of the month. And if we select about 20 such designs, by September, we would have from Bhopal and Gwalior and Jabalpur and Indore about 20 odd designers with us. And then we will produce these garments in a large quantity and put them in the Mrignani emporiums, which come under my department. So it is not just for fashion technology institutes. Let me be very clear about that. It is open for any student. The person can be a school student at the age of 15. The person can be an engineering student, a medical student, art student. So it's open for everyone. And this is to bring awareness about it. Now I come to today's topic is what is mind, what is your body, and we talk about the third aspect later. The topic also said for women, housewives, working women. As I say, I go beyond that because this applies to everybody. It applies to human beings, it applies to men, it applies to women also. But yes, I would always say that a working woman has more responsibility and things to do compared to a man. आपने बहुत कम लोग देखे होंगे, कितने पुरुष हैं जो कहते हैं कि आज मैंने घर का खाने का प्लानिंग किया, बच्चों का होमवर्क करवा लिया, एग्जाम की पढ़ाई करवा ली, ये सब करने के बाद में घर के बड़ों का सामान देख के, मेहमानों का देख के मैंने ऑफिस का भी काम कंप्लीट कर लिया. वेरी फ्यू मैन, बट विमेन आर मल्टीटास्किंग. दैट इज वाई जब हम देवियों का रूप देखते हैं तो हम जो अष्टभुजा देखते हैं वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि हम इतना सारा काम इकट्ठा कर सकते हैं. जहां तक कि सबसे पहले बात आती है वह है बॉडी की. If your body is in good condition, you can do anything. You can handle work pressures, stresses, and still do your best. तो मेरा इसमें ये अनुभव है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए और वो अच्छे से होना चाहिए. In fact, during the lockdown, I remember that one suddenly had so much of time कि मैं रोज़ योग तो करने के साथ साथ प्राणायाम हम 2-2.5 घंटे करते थे. And my daughters for the first time got introduced into that. और हमारे पास समय काफ़ी था. So something which is so important for physical fitness, we felt that should be actually discussed with all the school children. It's not just for the adults. And I'm very fond of painting, so मैंने जब अपने बच्चों को सिखाया तो इनकी 8 साल की उम्र में किताब पब्लिश हुई जिसमें इलस्ट्रेशन इन्होंने किया है. इन्होंने पूरा योग में सूर्य नमस्कार के बारे में वो किताब लिखी है. And I'm very happy that they got appreciation from the Prime Minister, from the President, from His Holiness Dalai Lama, from the Munger School of Bihar Yoga, and author Amish Tripathi. तो मुझे लगता है कि जब हम एक वेलनेस को एक पैशन बना लेते हैं तो हमारा शरीर ही नहीं, हमारा माइंड भी ठीक रहता है. अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू ईट. इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक इफ यू गेट टू रीड इट और एटलीस्ट रीड सम पार्ट ऑफ इट. एक डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलरीत चौधरी. ये अमेरिका में गई बचपन में एंड शी इज़ बिकम अ न्यूरो सर्जन देयर. बट शी कम्स बैक टू आयुर्वेद. आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन आयुर्वेद. इनफैक्ट मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होती तो मेरे ख्याल से मैं ज़रूर कोई वैद्य होती क्योंकि मेरे पास इतनी किताबें हैं और पूरा सुश्रुत से लेके चरक संहिता. आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड आई कीप रीडिंग अ लॉट. सो दिस बुक टॉक्स दैट what you eat, what is your gut bacteria. There are good bacteria and bad bacteria. Your good bacteria in your stomach later on move on and will come very close to your brain cells. So if you're eating well in your later life,
आपकी मेंटल हेल्थ भी आपके बॉडी से और आपके खाने पे डिपेंड करती है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. इट इज़ लिटरली ट्रेंडिंग 1 इन अमेरिका. और जितनी बार मैंने पढ़ा है मुझे नई नई चीज़ें मिली हैं, क्योंकि आयुर्वेद को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेस्टर्न रूप में प्रस्तुत किया है. नाउ दिस लेडी इज़ बैक इन केरला एंड शी इज़ वर्किंग ऑन साउंड मेडिसिन की हम जो मंत्र हैं और जो हमारे ओमकार की आवाज़ है उससे हम कैसे हील कर सकते हैं. Being a neurosurgeon and being a patient herself for good 15 years, she has come out of this. So I'm a great believer that you eat good food at the right time and preferably organic. अब मैं औरतों से क्यों बात कर रही हूँ? खाना बनाते हैं हम सब लोग घर पे, ठीक है, लेकिन समय से खाते हैं क्या? नहीं. We are our last priority. That is something which is very, very wrong. We should always eat on time. And by the time people are in their middle ages, acidity की प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज़ होने लगता है, हर तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं. हमारे पास अपने लिए 15 मिनट हम लोग निकाल नहीं सकते हैं टाइम से. हम सबके लिए करते हैं, हम सेवा भाव रखते हैं, तो अपने शरीर के प्रति नहीं सेवा कर सकते क्या? You are for yourself the most important person. So therefore, when I talk about body and I come to mind, the first thing I would say is keep your me time in the day as the most important time of your day. चाहे आप वो 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, उसमें आप किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ, अपने खुद के साथ संवाद कीजिए. उसमें आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, what you are supposed to timely see to it, फैमिली के क्या इश्यूज़ हैं, वो आप सब सोच सकते हैं. लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और आपको करनी है, और वो है if possible, not everybody is able to do it, but everybody can start with it, is meditation. मैं इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ कि आप जब अपने माइंड को काम करेंगे तो आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे. The best of ideas come from creativity. मेडिटेशन का मतलब है एक जगह बैठ के मेडिटेट करना, वही नहीं है. अगर आप किसी कला में क्रिएटिव हैं, and you can sit and do that, if you can sing, and if you just sing for half an hour only for yourself, पूरा तल्लीनता से, that is meditation. If you're fond of cooking, if that is therapeutic for you, और जब आप वो काम कर रहे हैं आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, जिस काम में आप दुनिया को भूल जाते हैं, that is like meditation for you, that is rejuvenation for you. So ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है that you keep your mind very very happy. और रात को सोने से पहले I always believe that your mind plays up a lot. अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो इसका मतलब आपका माइंड सेटल डाउन नहीं हुआ है. उसके लिए दूसरी चीज़ माइंड को शांत करने के लिए आजकल जो लोगों में बहुत बढ़ रही है इज देयर ह्यूज टाइम दे गिव टू सोशल मीडिया. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर टाइमिंग्स एंड आवर्स. और मोस्टली क्या होता है, रात को फ्री हो गए, चलो अब देखते हैं. लोग FB पे बैठे हैं, 2-2 घंटे लगे हुए हैं, कुछ देख रहे हैं. दैट क्रिएट्स हैवॉक विथ योर माइंड एंड बॉडी बोथ. आई एम नॉट सेइंग वी हैव टू बी कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड, but we don't have to be addicts of the social media. आप जितना ज़रूरी है उतना कीजिए, but not beyond that. And then, you know, अभी देवियों की बात चल रही थी मैसेज में, तो मेरा मानना है कि जब हमको शरीर की बात आती है, बॉडी की बात आती है, you need to feed the body, you need to nurture the body, you need to protect, clean the body. इस सब के लिए हमें क्या चाहिए? हमें द्रव्य चाहिए, साधन चाहिए. तो वहाँ रोल आता है लक्ष्मी जी का. सो एज यू आर ग्रोइंग यू नीड रिसोर्सेस टू नरिश योर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. हम लोग सब लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि एक जब हमारी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है उसके बाद हम आते हैं माइंड की तरफ. माइंड में आई एम नॉट सेइंग ब्रेन, आई एम सेइंग विजडम, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस. So here I would think of गणपति बाप्पा, क्योंकि वो आपको सही काम करने की बुद्धि दे रहे हैं. जब आपका माइंड स्टेबल है, जब आपका माइंड किसी भी दुविधा में होने के बावजूद भी अपना इक्विलिब्रियम नहीं खो रहा है,
वो जो माइंड आपको भगवान दे रहा है उसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी थैंकफुल. ऑल्सो गणेश जी, अगर आप अपने सातों चक्रों को देखेंगे तो मूलाधार जो सबसे बेसिक चक्र है, उस चक्र के देवता गणेश जी हैं. सो आपको ग्राउंडिंग देते हैं, आपको बुद्धिमत्ता देते हैं. अगर हमें जिंदगी में पैसा है, माइंड है, तो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. Why are we thinking of being spiritual? Why? आपने तीसरा कॉन्सेप्ट भी डाला है, मतलब कुछ तो महत्व होगा. कभी जिंदगी में जब हम सब कुछ करते हैं, एक समय नहीं आता जब सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ आवर लाइफ. एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस लाइक हम पैदा ही क्यों हुए, हम करना क्या चाहते हैं. और हमने अपना करियर अचीव कर लिया, फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन एक कुछ अंदर कमी, एक शून्यता का कभी कभी आभास होता है. और तब हम सोचते हैं what is it that we are lacking, what is it that we want more in life, and that I would say is most important. ये दो चीज़ें तो हमारे पास हैं ही, इसीलिए हम जब दिवाली में पूजा करते हैं तो माता सरस्वती भी होती हैं. She is a person, I think, who represents the soul. She represents creativity. और वो हमारा सबकॉन्शियस भी रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि हम सब कुछ जो कर रहे होते हैं ना, हम काम में भागते रहते हैं. देयर आर टाइम्स हमारा मन कुछ कहता है ये करें, ये नहीं करें, ये सही है, गलत है, हम सोचते नहीं हैं उसके बारे में ज़्यादा. ये मुझे लगता है कि अगर हम ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारी अंदर की आवाज़ बुलंद होती है, लेकिन हमने उसको सबसे कम प्रायोरिटी दे रखी है. अगर ये दो पहिए हैं जो कि हमारा माइंड है और बॉडी है, ये दोनों अगर पहिए साथ में चल रहे हैं तो एक हमें गाड़ी में दिखता नहीं है कि बीच में जोड़ने के लिए एक उनका एक्सल भी है. एंड दैट इज व्हाट आई वुड कॉल द सोल और द स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव, जो दोनों को बैलेंस में रखे. और ये तीनों चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं. और मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोगों में आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक डेवलपमेंट बाद में होता है, कुछ में पहले होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारी सबकी जर्नी है, इसमें किसी से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जहाँ जिंदगी में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं कि लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं दैट लाइफ इज़ सो टफ एंड दे हैव टू डील विद इन अ डिफरेंट वे, और कुछ लोगों को इस चीज़ें बहुत बाद में आती हैं. हर एक का अपना अपना प्रारब्ध है. बट आई पर्सनली फील if we have been given the human life, and if we are women, we are the people who are, thank you, if we are the people who are giving birth to next generation, we have to be extra sensitive. हमारा परिवार जो है, हम सब जो बैठे हैं, हम जो बच्चों को संस्कार देते हैं, उसमें मेरा ये मानना है कि a mother's role is far more important than father's role. और ये जो संस्कार हैं, ये किसी पेड़ के जड़ की तरह हैं. कितने भी आंधी तूफान आए, उस पेड़ को हिला नहीं सकते हैं, चाहे झुका दे, लेकिन हम वहीं डटे रहते हैं. सो माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू द women today is, as mothers, as daughters, as sisters, as wives, is that no matter what, believe in yourself. कोई आपको कुछ भी कहे और आपको कितना भी ये कहे कि आप केपेबल नहीं हो, तो उनकी बात आप कभी भी मन पे ना लें, कभी भी नहीं. जस्ट गो ऑन वर्किंग. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, बट देयर इज वन थिंग, मेरा विश्वास ये है कि जब हम किसी चीज़ पे बहुत फेथ रखते हैं, बहुत आस्था रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स कि आपको वो चीज़ मिले. और मैं ये मानती हूँ दैट women आर मोर इंट्यूटिव, women आर इमोशनली स्ट्रॉन्गर, women have faith which is stronger, and therefore they are more capable of achieving their dreams faster. But women are also more vulnerable, क्योंकि उनको लगता है हम किसी ने कुछ कह दिया, हमें करने दिया जाएगा क्या. दिस जनरेशन आई थिंक डज नॉट बिलीव कि हमको परमिशन चाहिए, कुछ होता होगा कहीं जगह, किसी जगह. तो आप जब माँ बने तो अपने बच्चों को वो उड़ने के लिए आप हौसला दें,
उनके उड़ान के लिए उनके पंख बने आप ये मत कहिए कि ये तो लड़की है तो नहीं कर पाएगी। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई, मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूं, तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे लिए कोई इम्पेडिमेंट्स होंगे। मैं जहां जहां गई, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो आदमी है तो मुझसे आगे है और मैं ये नहीं कर पाऊंगी, और ना मैंने कभी जेंडर को अपने काम में लाया। मैं जब डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती थी, मुझे याद है कि मैं शायद अकेली महिला होती थी और 400 लोग बैठे रहते थे, एंड दे वर एक्सट्रीमली जेंडर कॉन्शियस, एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू से दैट आई एम द ऑफिसर, यू आर लिसनिंग टू मी इन माई ऑफिशियल कैपेसिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ माई जेंडर। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही हैं, और मेरा बस यही कहना है दैट लेट अस सेलिब्रेट every occasion, every moment of womanhood. It's given a choice being born as a man or a woman. Believe me, I would still opt and be a woman, because there is so much more we experience being a woman. तो ये एक जश्न होना चाहिए कि हम महिलाएं हैं, और वो सिर्फ एक दिन के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। और हमें ज़िंदगी में एक चीज़ बस और कहूँगी महिलाओं से, लेडीज़ से, you must learn how to say no. I have met so many women जो जिंदगी में कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, परिवार ने इसने ना बोलें तो उसको बुरा लग जाएगा. Be very nice, be very firm, but you say, this is my dream, this is my life. I'm not harming anybody, I'm not hurting anybody, but I don't take no for an answer. मैं आपका भी करूँगी, मैं अपना भी करूँगी. तो जिसने ज़िंदगी में अपने बल पे खड़े होने के लिए जितनी जल्दी ना बोलना सीख लिया प्यार से, वो उतना ही आगे जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you very much, ma'am. We all are inspired and motivated by thoughts of our honorable ma'am. Thank you, ma'am, for giving us time from your busy schedule, and we are fortunate enough to have such dignitaries among us. Now, it's time to felicitate the great personality and their achievement. A strong woman understands that the gift such as logics, decisions, and strength are just as feminine as intuition and emotional connections. So, let us invite Professor Poonam Bohra, Director, Institute of Fashion Technology, IPS Academy, to present prestigious award, the Woman of Substance Award, to Ms. Smita Bhardwaj, ma'am. I request both of you to please grace the stage by your presence. Please, ma'am. Flowers do not worry about how they are going to bloom. They just open up and turn towards the light, and that makes them beautiful. Believe you can, and you are halfway there. Today, we have one such great personality among us who believed in herself and never stopped. The rest is history. I'm talking about Anuradha Saxena, ma'am, a motivator and social worker. Ma'am has completed her MBA in English Literature. She also have a diploma in interior designing from Women Polytechnic College, Indore. In late 2008, ma'am was diagnosed with third grade breast cancer. Ma'am joined Dr. Anupama Negi, founder of Sangni, a best cancer rehabilitation center. Then, ma'am became the member of Sangni in 2009 and learned how to work her way through the network of doctors to reach out to more and more patients. In 2011, ma'am took the responsibility and became the coordinator of Sangni. She has consoled over thousands of women from various parts of Indore and grown the NGO to grow of 15 survivor
Ma'am also provide counseling to patients over the phone and has helped women battling with cancer in USA as well. She has conducted over 125 breast cancer awareness program in last 9 years. Mrs. Saxena is currently a metastatic breast cancer stage 4 patient and was diagnosed with tumor in her spinal cord last year in February. But it has not shaken her motive to help and serve women of society. She has won multiple awards for her selfless work, including the Indian Express Devi Award given by Honorable Chief Minister Mr. Kamal Nath and 51st Most Influencing Woman of Indore Award by Bridge Bhumi Foundation. And the list of awards of ma'am is endless. Ma'am has won Lions Club Dynamic Award, Akhil Bharatiya Kalyan Mahasabha Felicitation for Social Work and in 2010, Universal Solidarity Movement Award, Rotary Club Indore Award, and lots many more. So I request ma'am to please say few words and motivate all of us. Please ma'am. नमस्कार सभी को, हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वैसे आई डोंट बिलीव इन दिस कंसेप्ट कि विमेन का एक दिन नहीं होता है एक सेलिब्रेशन करने के लिए। तो विमेन तो हमेशा पावरफुल हैं और हमेशा उनका सेलिब्रेशन होना चाहिए। बट जस्ट जैसे अचल सर ने कहा कि यूरोपियंस ने एक ये डे बना दिया है, तो दैट्स गुड कि हम एक दिन अपने आप के लिए सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विमेंस डे सेलिब्रेशन इज़ वेरी नाइस, बट आजकल अब जैसे जेंडर इक्वालिटी हो गई है, तो बिगिन विथ हमें अपने घर में ही ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि हम अपने ही जब 2 बच्चों को बड़ा करते हैं, बेटे को और बेटी को, तो बेटी से हम घर के काम कराते हैं बट बेटे से नहीं कराते हैं। तो ये बीज हमको अपने घर में ही बोना है कि हम जेंडर इक्वालिटी के लिए करें, तो जितना काम हम अपने बेटे से करवा रहे हैं उतना ही हम अपनी बेटी से कराएं। तो बड़े होकर के जो आजकल बोल रहे हैं, अभी जैसे स्मिता मैम ने बोला कि आजकल गर्ल्स को लगता है परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी पे सोचते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस चीज़ का हमको बीजारोपण अपने घर से करना चाहिए। और सेकेंडली आज का जो टॉपिक है माइंड बॉडी सोल हैप्पीनेस, तो उसके लिए क्योंकि मैं इन सब मतलब बहुत सारी जर्नी से गुजरी हूँ। कैंसर के दौरान बहुत सारी आपको तकलीफ़ें होती हैं, माइंडसेट भी गड़बड़ होता है, बट मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि इवन आफ्टर एनी फिजिकल डिसेबिलिटी इन माई माइंड, अगर मैं इन माई बॉडी अगर माई माइंड स्ट्रेंथ इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, आई कैन विन। और इसीलिए मेरा जो संगिनी ग्रुप है उसमें हम अपने आप को एड्रेस ही करते हैं एज विजेता, मतलब जिन लोगों ने कैंसर को हरा दिया है और कैंसर पे विजय पा ली है। तो उस तरीके की सोच रखने से मतलब आपकी बॉडी, जैसे कि हमको बॉडी का अपना ख्याल रखना चाहिए। डेफिनेटली हर वुमेन को अपनी बॉडी के लिए ध्यान रखना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट ध्यान रखनी चाहिए। बट इन एनी केस अगर आपके पास कोई डिजीज़ आ जाती है तो उसके साथ आपको निराश नहीं होना चाहिए और उसको बल्कि एक्सेप्ट करके गो विद द फ्लो, और आप उसको एक्सेप्ट करके और करते हैं तो आपका माइंडसेट उसको पॉजिटिविटी देता है। तो ये हुई माइंड की बात, माइंड और बॉडी की। तो उसके लिए आप जैसे अपने डाइट के लिए हम लोग एक छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं कि रोज़ के हम औरतें सोचें कि मुझे 9 चूड़ी इस हाथ में पहननी है और दिन भर में मैं 9 फल और सब्जियां 9 कलर की खाऊंगी और हर बार एक चूड़ी इधर कर ली। तो दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। ये आपको बॉडी को बहुत अच्छे से मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा, फिर आपके अच्छा हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गई माइंड और बॉडी की बात। फिर रही सोल की, तो अब मेरी जो जर्नी होने के बाद में मेरे को जीवन में ये समझ में आया कि लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है। कैंसर होने के बाद मतलब उसके पहले तो हम लोग वही सब अपना घर गृहस्थी देखते हैं। आप लोग वर्किंग वुमेन हैं तो यू वर्क फॉर होम एंड फॉर योर वर्क प्लेस ऑल्सो। बट उसके बाद जैसे मेरे जीवन में कैंसर आने के बाद मुझे ये समझ पड़ा कि किसी एक के चेहरे पे अगर मैं मुस्कान लाती हूँ तो मैं ज़िंदगी में अपने आप को धन्य समझती हूँ, और दैट मेक्स मी कि ये मेरा ब्यूटीफुल सोल है। तो कोई व्यक्ति अगर मेरे पास रोते हुए आता है और मैं उसके कंधे पे हाथ रख के उसको मुस्कुराता हुआ भेजती हूँ, तो ये मेरे लिए माइंड बॉडी सोल सबकी हैप्पीनेस काउंट करती है। तो ये एक छोटा सा कार्य है जो हम कर सकते हैं। किसी भी दुखी व्यक्ति को, किसी को भी जैसे हम हाथ उसके कंधे पे रख दें जब वो
किसी भी तकलीफ़ की जर्नी में हैं, तो दैट मेक्स अस हैप्पी। और वही जैसे अब स्मिता मैम ने कहा मेडिटेशन, तो मेडिटेशन जैसे मेरे लिए भी यही है कि क्रिएटिविटी जो होती है वो मेडिटेशन है। जैसे आई ऑल्सो डू पेंटिंग, तो आई एम एनग्रॉस्ड इन पेंटिंग, तो वो मेरे लिए मेडिटेशन है। हम लोग जो महिलाएं होते हैं वो सोचते हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो जिस चीज़ के लिए आपको, जिस चीज़ का जीवन में शौक़ है, उस चीज़ के लिए रोज़ के आप अपने शेड्यूल में से, आपके पास देखिए ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं और सभी को अपने सारे काम करने हैं, पर टाइम मैनेजमेंट एक स्त्री से ज़्यादा कोई और अच्छे से कर नहीं सकता है। तो अगर आपको पता है कि मुझे आज ये कार्य करना है, तो मुझे उसके लिए मुझे आधा घंटा निकालना है। जैसे आज ही ये कार्यक्रम है, हमको इसके लिए निकल के आना है, तो आई नो कि मेरे इस 24 आवर्स के शेड्यूल में से मुझे ये चीज़ करनी है। उसीलिए मैं आप सब मतलब विमेन को बोलूँगी कि जो आपकी हॉबीज़ हैं उसको कोई भी उम्र नहीं होती उनको पूरा करने की। तो जिस उम्र में आपको अपनी हॉबीज़ पूरी करनी मिले, वो एक तरीके का आपके लिए मेडिटेशन है कि आपने अपनी हॉबीज़ पूरी की, अपने लिए कुछ किया, तो यू विल फील कि हाँ आई लव, कुछ अचीवमेंट का आपको फीलिंग आता है। एंड सेकेंडली जैसे अब माइंड, बॉडी और इन सब के लिए तो जो डिजीज़ प्रोन हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक मतलब दिस इज़ ऑफ द टॉपिक, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब लोगों से कि जैसे मैं इस जर्नी से निकली हूँ, तो वी कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, आप लोगों के यहाँ पे भी हम कर चुके हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसे हम लोग बर्थडेज़ होते हैं, सबके एनिवर्सरीज़ आती है, तो मैं अपना बताऊँ तो मेरा कैंसर का डिटेक्शन मेरी बर्थडे के दिन हुआ था, और सेकेंड टाइम मेरा जब कैंसर वापस से रिलैप्स हुआ तब मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन डायग्नोज हुआ। तो उसके बाद से अब हम लोगों ने अपने लाइफ में एक नियम बना लिया है कि किसी को भी हमको बर्थडे पे गिफ्ट देना होता है, तो हम लोग बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि अरे क्या दूँ क्या दूँ। तो अब हम लोग सबको ये बोलते हैं कि आप उस दिन अपने फैमिली मेम्बर को एक हेल्थ चेकअप दीजिए, क्योंकि वो अगर मैंडेटरी हो जाता है तो आदमी जाता है नहीं। तो हमारे घर में जैसे हमारी दादी हैं, नानी हैं, या हम लोग खुद भी हैं, या अपनी माताएँ हैं, कोई अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान नहीं रखता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने उनको वो गिफ्ट दे दिया तो वो उनके लिए मैंडेटरी हो गया कि नहीं अब ये तो मुझे चेक कराना ही है, तो एक उनकी एनुअल चेकअप की डेट फिक्स हो गई। तो उस तरीके से आपने अपने बॉडी को अच्छा कर लिया, आपका माइंडसेट ठीक हो जाएगा, आपकी बर्थडे वाले दिन आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाती हैं, एंड दैट विल लीड टू योर हैप्पीनेस, तो आपका सोल भी अच्छा हो जाएगा। That's it. And once again, wishing you all a happy International Women's Day and honored to be here. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your journey and for sharing your words. Now, I request Dr. Premlata Gupta, ma'am, Principal IPS Academy Indore, to please felicitate Anuradha, ma'am, with the Women of Substance Award. Ma'am, please. Thank you so much, ma'am. And thank you, ma'am, for taking time from your busy schedule and gracing our program. Thank you, Anuradha, ma'am. Thank you so much. Now moving ahead, again we have a great personality among us whose lessons and motivation can bring an optimistic transition to anyone's life. It is indeed a privilege for all of us that we have joined with Dr. PVKS Hettiarachchi, ma'am. Ma'am is lecturer in oral medicine and radiology. Ma'am is BDS honors from University of Pasadena, MD in oral and maxillofacial surgery, University of Colombo. Ma'am has research interest in the field of psychological effects of oral facial pain, dental radiology. Please welcome ma'am on the stage for few words. Good evening, everybody. And I'm very much privileged to be here today. And I was taken by surprise because I was not prepared for a speech, in fact. But then I came here a few days back to Indore and to the IPS Academy yesterday. And I was quite feeling a bit alien because I was among the engineers, and since I'm coming from the medical background. But today I feel I fit here more than yesterday because being a woman myself. So as a woman, I would just
say a few words about my career. And I truly agree, because being a housewife and a working person is not easy task. But if you have a will, you will be able to accomplish it. So being a mother of 2 sons, it's not easy for me to leave them aside and be here. But as the previous speakers was telling, we are very strong enough in our mentality. So maybe that is the reason why we are able to pursue our careers in a more quicker manner than the men. And I'm very much grateful to the speaker before, that is Anuradha, right? Yes, she was a cancer survivor, and I do work a lot with cancer survivors, and I have seen how they suffer, and I have so much respect towards her to be able to come and speak up a few words and showing or highlighting the being a woman, how strong they are. So happy Women's Day, everybody. And I'm so much honored to be here with you all to share this memorable moment. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your words, for your time. Now, women continue to make tremendous inroads, and there is no signs of it slowing down. Women know their worth and what they are capable of accomplishing. So, let us invite Dr. Archana Chaudhary ma'am, Principal, Institute of Engineering and Research, IPS Academy, to present prestigious award to Dr. PVKS ma'am. I request both of you to come on stage and grace the stage by your presence. Now, moving ahead, I am extremely overwhelmed to get this opportunity to welcome our next dignitary, who is going to talk about the strength, motivation, smart work, and capability of a woman. It is well said that a woman are known to have better intuitions, patience, capability, ability. The list of female strength is endless. It's my pleasure to introduce Dr. Nandasiri ma'am. Currently, ma'am is working as a faculty of engineering at Department of Textile and Apparel Engineering, University of Moratuwa. Please welcome ma'am on stage for a few words. Please welcome ma'am. Hi. Good afternoon, everybody. So I'm also actually privileged to be here. This is also my first time visit to India, and at the same time I was also here yesterday. So I think it's a privilege to talk on the Women's Day itself. So being a woman, I think I would like to talk about myself, because in engineering, I think I have seen in the academy, if you take an example, it is head by an woman, which is, to be honest with you, it's a very rare occasion to be seen, where in the field, mostly, it is dominated by men. So we have experienced the same in Sri Lanka. I'm from Sri Lanka, so the same way. So being a woman in engineering or in STEM, I would say, it is something very difficult for you to prove yourself, because it is perceived in a way that's feeling that these fields are belong to men. However, I think women in today has changed it. So I believe in becoming a woman of substance. So I think these women who I have seen in IPS Academy are full of substance. So I think in that way, there is a possibility that we can actually, compete with men. I'm not saying it is a competition. However, it's a kind of a perception that it is built into the society. This is not for you. It is not the way that it is. It is for everybody. I think as most of the speakers who actually spoke today, they said that they believe in equality. I do the same. It is not the feminism that we talk for. Please give us the same way that you treat a man. So it shouldn't be in the way that you feel that the women are considered in their job.
it shouldn't be considered for them to say categorize them into one job. So it was quite surprising to me to see that somebody, women, is running an institute which is for engineering and research. Because in most of the country, this is not the case, because they believe that this is not for us. However, there are many wonderful women who have done wonderful things to science. I think there is only one woman in the history who has won the Nobel Prize for physics and chemistry both. I think that is Professor Marie Curie. I think that's enough substance of example how women can be strong. And then to all of you gathered here, the faculty as well, I would like to say, pursue your dreams. It shouldn't be restricted to the fact that you are a man or a woman. It is that your dream that you are going to achieve. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your precious words. We are fortunate to have you with us today. Now, a woman deserves to be celebrated for their extraordinary contribution to the society, remarkable moments, and unmatched fearlessness. A female should know two things: who and what she is. Now, moving ahead, I would like to invite Professor Manita Saxena ma'am, Principal, School of Architecture, IPS Academy, to present prestigious award to Dr. Gayani ma'am. Please welcome ma'am on the stage and grace the stage. Thank you so much, ma'am. After hearing wonderful speeches, we have some special performance for all of you. Art is like a woman. To look more attractive, it must be in harmony with the spiritual atmosphere or fashion of its time. Truly, the nature of woman is closely aligned to art. So now, let us welcome students from the School of Performing Art to give their amazing and fantastic performance. Here, we are presenting a special performance from students of School of Performing Arts. Please. दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। न्याय की जंजीरें हो गई भंग, न्याय की जंजीरें हो गई भंग। ज़माना चले ना चले मेरे संग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ
चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना। किरणों के दिन के अंबर से चुन के अंधेरा में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए। हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंगना में फिर आ जा रे। अंगना में फिर आ जा रे। सोचा कहाँ था ये जो हो गया। माना कहाँ था ये लो हो गया। चुन्नी कोई काटो ना है हम तो होश में। कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है। अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है। अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो आसमां का छात है मुद्दतों की बात है। समान धक धक करे शहर है या ये रात है। आए तू भरवा क्यों हो गया बाखुदा क्या बात है। बाखुदा क्या बात है। बादल में पाँव है या झूठा गाँव है। अब तो भी चल पड़ी अपनी ये नाव है।
भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं। हाय टूटे सारी की सारी मैं, तेरे इश्क में हुए आवारे मैं। हाय टूटे सारे की सारे मैं, तेरे इश्क में हुए आवारे मैं। आयगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि कृष्णनुते। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। What an amazing performance. Fantastic, marvelous. We enjoy a lot. Now, I would like to thank all the participants, Sonam Lele, Shruti Joshi, Anuja Mehna, Ashi Joshi, Ayushi Srivastav. On guitar, we have with us David Anthony, faculty at School of Performing Arts IPS Academy, and on cajon we have joined with Chinmay Patidar. So thank you so much, this team, for performing chorus song group. And now, for the dance performance, I would like to thank Ritu Gupta and Bhavika Karla. Thank you so much for superb performance. It is a pleasure that we have among us Mrs. Sangeeta Chaudhary ma'am, management member. So, I request Dr. Vaishali Sharma, Head, Department of Commerce, IPS Academy, to please present floral welcome to ma'am. Before we wind up today's fun, I would request Dr. Shalini Mathur ma'am, Head Department of Humanity, IPS Academy, to come on the stage for vote of thanks. Please welcome ma'am. Namaskar. With the support and cooperation of everyone involved and blessings of Almighty, we have now come to the final phase of today's very informative and entertaining program. Before we bid adieu, on behalf of IPS Academy and especially on behalf of female faculty and staff members, I, Dr. Shalini Mathur, would like to convey our heartfelt gratitude to everyone involved directly
or indirectly in making this program a great success. First of all, I would like to offer my gratitude to Almighty God with folded hands for His wonderful creation named women, the reason of today's celebration, and without whom every home, every heart, every feeling, and every moment of happiness is incomplete. So thank you, God, for creating this amazing, for His amazing creation, which is in fact a creator or image of God Himself. I would like to convey my thanks and gratitude to all the honorable guests for today's celebration. Mrs. Smita Bhardwaj, although she has left, Mrs. Anuradha Saxena, Dr. PVKS Hettiarachchi, I hope I have pronounced your surname correctly, and Dr. Gayani K. Nandasiri for sparing time from their busy schedule and to be with us for this function and sharing your experiences and idea with this August gathering. Thank you so much. And like you all have covered wide range of issues related to balancing mind, body and soul. And like as Anuradha ma'am has said, gift of health checkup, this is wonderful idea. And as Smita ma'am says that jashan hona chahiye, but not for one day. It's celebration for women for every day. And as Dr. Gayani has said, believe in equality. That is again a very, means neither put the female at the top or at lower level, but at equality level. So thank you so much, ma'am. And I take this opportunity to thank the management of IPS Academy for their continuous support and guidance to all of us in very unbiased manner. My special thanks is due to respected Kumudni ma'am, Nidhi ma'am, Sangeeta ma'am for joining all of us at this occasion and gracing the occasion. I thank the students and mentors of School of Performing Arts for their spellbounding performance and making this afternoon a quite melodious one. I would like to thank Sandeep Gupta sir and his team member for all the required technical support and for the smooth conduction of the program and live streaming of this program. I would like to express my thanks to Dr. Manish Pundlik sir and his cultural team for tirelessly working for past few days to make this program a grand success. And my task will remain incomplete if I do not mention these colorful, beautiful pink audience who remain very participative and enthusiastic throughout the program. So my thanks to all of you for just sparing time and attending the program. And once again, I extend my thanks to all those who are indulged in the culmination of this program in any way. Thank you all. We wish many more such programs in future. Thank you and namaskar. Thank you very much, Shalini ma'am. Now, I feel we are at the end of the program. So thank you very much for sparing your time. Happy Women's Day once again to all of you.